Assalamualaikum dear students, and I hope you are all doing good. And today we will again continue this chapter. And today's topic from the chapter industries is classification of industries, as I have written on the board. So today we are going to discuss the various classification of industries based on different aspects. So first of all, we have here classification of industries on the basis of raw material. यानी रॉ मटेरियल के हिसाब से जो इंडस्ट्रीज है हम उनको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. तो ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल वी क्लासिफाई वी डिवाइड इंडस्ट्रीज इनटू four categories. On the basis of raw material we divide or we classify industries into four categories. First one is agro-based industries. Second, mineral-based industries. Third, marine-based industries, and forest-based industries. Okay. So one by one we will discuss what are these types of categories. Okay. So agro-based industries, as the name suggests here, agro. That means it has their base. Yani industries are agro-based, on which they have base from the plants and animals. That means they are plant and animals sources. यानी जो रॉ मटेरियल है वो हमें प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है. फॉर एग्जांपल वी हैव कॉटन क्लॉथ्स. सो कॉटन इज एक्चुअली अ प्लांट. कॉटन जो हमें निकलता है रॉ फॉर्म में कॉटन, तो उसको हम रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं. एंड देन वी यूज कॉटन टेक्सटाइल्स जिसे हम बनाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे लेदर है वो भी एक प्लांट से निकलता है, तो दैट इज आल्सो लेदर is also agro based. And many, like we have dairy, that means milk production that we get from the animals, from different cows and vegetables. This is agro based industry, that is whose base or whose raw materials are from plants and animals. Okay. So moving toward the second category, mineral based industries. So obviously those industries which have their raw materials as get obtained from minerals. For example, mostly we use here iron ore. That means iron ore is a base raw material for different industries. For example, it helps us in the automobiles and constructions, or the construction of railway sleepers, or construction of railway coaches and different types of goods. So those industries whose raw material are iron or minerals are known as mineral based industries. So moving towards the third one, marine based industry. That means they are based raw materials are getting from the sea or oceans. For example, we use seafood as a raw material, and that is the final product. Or for example, we use fish oil that we get from fish. Okay, so this is marine based industries. Forest based industries are those industries whose raw materials comes directly from the forest. For example, we use wood, as we have already discussed in our first lecture, as we use wood for the paper making, or we use wood for the furniture purpose. So that is based, all those industries are based on forest based industries, are based on forest products. Okay. Now this was the first category of industries based on raw material. Now second category is the classification of industries on the basis of size. Now what here size means? यानी वो इंडस्ट्रीज साइज के हिसाब से हम किस तरह से इनको डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल साइज के हिसाब से मींस वहां पे कितना कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कितना पैसा हम किसी इंडस्ट्री में लगाते हैं. तो अगर ज्यादा किया तो ऑब्वियसली वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी, अगर कम किया तो दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एंड साइज हम ये तीन और चीजें जो हमें डिटरमाइन कर सकता है whether a particular industry is a small scale or large scale. For example, we have number of people employed. Obviously, अगर ज्यादा लोग किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, that is large scale industries. अगर कम है तो small scale.
एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जब लोग ज्यादा किसी इंडस्ट्री में होंगे, जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑब्वियसली तो प्रोडक्शन जो होगा वो भी ज्यादा होगा. तो दैट मींस एट दैट टाइम it define us the size of the industry. So on the basis of size, we divide industries into two parts: small scale industries and large scale industries. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, तो बसली वहाँ पे ज्यादातर मशीनरी का यूज नहीं होता. वहाँ पे जितने भी गुड्स बनाए जाते हैं मोस्टली बाय हैंड, यानी वो जो कारीगर होते हैं वो हाथों से वो चीजें बनाते हैं. जैसे इसमें मोस्टली आता है कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे यहाँ पे मोस्टली हम यूज करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स, इसमें आता है पॉटरी या कारपेट वेविंग, सारा जो होता है हाथों से बनाया जाता है. दैट कम्स अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. यहाँ पे मशीनरी या कैपिटल या टेक्नोलॉजी का यूज बहुत कम होता है. ओके, तो कमिंग टुवर्ड्स दिस लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जैसे लार्ज तो वैसे यहाँ पे कैपिटल ज्यादा होगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा होगा एंड यहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल इज हायर, टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड यूज ऑफ मशीनरी बहुत ज्यादा होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में. ठीक है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आता है आयरन एंड स्टील में, जो हमें आगे पढ़ना है, जो इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, मोस्टली यहाँ पे आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी जो कोई इंडस्ट्री है वो कौन मैनेज कर रहा है, उसका जो ओनर है वो कौन है. ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगेन industries are classified into four categories: private sector industries, state owned or public sector industries, joint sector industries, and the last one is cooperative sector industries. Okay, now one by one we will discuss them again. Okay, now private sector, as the name indicates here, private sector industry. Obviously, these are those industries which are managed, or we can say which are owned, which are operated by a particular individual, by private individuals. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इंडिया में रिलायंस, this is private industry, तो this comes under private sector industries. For example, Reliance India Limited is a private sector industry. Okay, now second, state owned or public sector. To state owned or public sector, these are those industries which are operated or managed by the government. तो इसमें मोस्टली आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड and Steel Authority of India. That means these two industries are state owned or which are owned by the government. They are known as public sector industries or state owned industries. Now coming to that industry, joint sector industries. Okay, now joint sector industry में क्या होता है, which are both. There is a partnership between government as well as private. So there is a these are partially managed and owned by two groups, government as well as private individuals. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मारुति उद्योग लिमिटेड. एक्चुअली मारुति इज अ कंपनी फ्रॉम जापान एंड जापान tie up with the Indian government. That means this is the joint sector industries. Okay, so this is Maruti Udyog Limited. It comes under joint sector industries. Okay, now cooperative sector industries. Cooperative sector industry means that as we know, there are different suppliers of different things. For example, here I have written Anand Milk Union Limited. Anand Milk Union Limited. That is actually AMUL. ठीक है, जैसे बटर आता है अमूल का. ठीक है, तो ये वही है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. तो ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं किसी चीज के, वो चीज जो प्रोड्यूस वो करते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क वो प्रोड्यूस करते हैं, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट प्रोड्यूसर. तो वो